ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमश्चंडिकाय। आइए मित्रों, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हम सीख रहे हैं। आज श्री दुर्गा सप्तशती के छठे और सातवें अध्याय का पाठ करना सीखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे अध्याय हैं। षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत् तंसोरुरत्नावली। ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत् तंसोरुरत्नावली। भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां। भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां। मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां। माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां। माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां। सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच। ॐ ऋषिरुवाच। इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्यासुरराट् ततः। सक्रुधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनं। हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां। तत्परित्राणदः कश्चित् यदि उत्तिष्ठते परः। तत्परित्राणदः कश्चित् यदि उत्तिष्ठते परः। सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच। तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययो। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां। जगादोच्चैः प्रयाहीति
मूलं शुम्भनिशुम्भयोः मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति मद्भर्तारमुपेष्यति ततो बलान्नमाम्यैष ततो बलान्नयाम्यैष ततो बलान्नयाम्यैष केशाकर्षणविह्वलां केशाकर्षणविह्वलां देव्युवाच देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्ति परश्वधैः ततोद्धुतशठः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपाता सुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सजघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केशसि तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नः बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठात् अन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहने नातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहितं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भप्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चतौ चण्डमुण्डो महासुरौ
हे चंड हे मुंडबलैर, हे चंड हे मुंडबलैर बहुभिः परिवारितो, बहुभिः परिवारितो। तत्र गच्छत् गत्वा च, तत्र गच्छत् गत्वा च, तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानीयतां लघु, सा समानीयतां लघु। केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा, केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयो युधि, यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैः, तदा शेषायुधैः सर्वैः असुरैर्विनिहन्यताम्, असुरैर्विनिहन्यताम्। तस्यां हतायां दुष्टायां, तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते, सिंहे च विनिपातिते। शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा, शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकां, गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। तो इस प्रकार से छठा अध्याय तो हो गया। अब हम 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, पाठ करना सीखते हैं। 2 अध्याय छोटे छोटे हैं, इसलिए इनको दोनों को एक ही वीडियो में ले लिया गया है। सप्तमोऽध्यायः, सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्ते काङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं, न्यस्ते काङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं। कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां, कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां, कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां। मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालां, मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। ॐ ऋषिरुवाच, ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्यास्, आज्ञप्तास्ते ततो दैत्यास्, आज्ञप्तास्ते ततो दैत्यास् चण्डमुण्डपुरोगमाः, चण्डमुण्डपुरोगमाः। चतुरङ्गबलोपेता, चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः, ययुरभ्युद्यतायुधाः। चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः। ददृशुस्ते ततो देवी, ददृशुस्ते ततो देवी मीषद्धासां व्यवस्थितां, मीषद्धासां व्यवस्थितां। सिंहस्योपरि शैलेन्द्र, सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने,
शृंगे महति कांचने ते दृष्ट्वा तां समादातुं ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यता उद्यमं चक्रुरुद्यता आकृष्टचापासीधरास् तथान्ये तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चै अंबिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सावेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अभक्षयत तद्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समन्वितान् पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योद्धं तुर्गै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रैर्दशनैः चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्य मुरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरै
मुखेन जग्राहरुषा मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं बलिनां तद्बलं सर्वं असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्यान् अन्यांश्चा ताडयत्तथा ममर्दा भक्षयच्चान्यान् अन्याश्चा ताडयत्तथा असिना निहता केचित् केचित् खट्वाङ्गताडिताः जगमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं असुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डोभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुघनोदरं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर् दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महान् सिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ साखड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहास मिश्रमभ्येत्य चण्डिकां
मिश्रमभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतो मया तवात्रोपहृतो मया तवात्रोपहृतो चण्डमुण्डो महापशु चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच तावानीतो ततो दृष्ट्वा तावानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणीं उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति ख्याता देवी भविष्यसि ख्याता देवी भविष्यसि ख्याता देवी भविष्यसि। ओम ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्री दुर्गार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे।